तो वो कस्टमर को जो रेट कस्टमर के लिए जो रेट होगा वो 12% इंटरेस्ट से कैलकुलेट हो जाएगा, वो 100 पे। नाउ इसमें आफ्टर 4 मंथ्स, तो 12 इंटरेस्ट से 12 मंथ से 4 रुपीज इंटरेस्ट, सो प्रेजेंट वर्थ 100 रुपीज एंड 4 रुपीज इंटरेस्ट, तो टोटल वर्थ हो गया 104 मीन्स 104 रुपीज। मीन्स जो बायर्स है, जो प्रोडक्ट उसने बाय किया है 4 मंथ के बाद उसे 104 रुपीज पे करना है बिजनेसमैन को। सो इसमें प्रेजेंट वर्थ इज मीन्स प्रेजेंट वर्थ मीन्स बेस्ट प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट, टुडेज प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट वर्थ। एंड ट्रू डिस्काउंट मीन्स some amount of interest is calculated on that product, that is called as a true discount। means जो 4 मंथ के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट मीन्स ट्रू डिस्काउंट। एंड आफ्टर 4 मंथ्स द बायर्स हैव टू पे total amount to the sales, that is businessman, so total amount after 4 months is 104 rupees। so this 104 rupees is called as a sum due or face value। means present worth is PW, this is true discount, जो interest है 4 rupees, that is called as a true discount। and after 4 months that is called as a sum due or face value। so these are the 3 definitions। now fourth definition है drawer and drawing। so इस केस में sum due or face value is equal to present worth plus true discount। means sum due means प्रोडक्ट का बेस प्राइस प्लस इंटरेस्ट, जितने मंथ के लिए क्रेडिट पे वो प्रोडक्ट ले रहा है, so that is the present value plus true discount, that is called as a sum due। so the sum due is equal to present value plus true discount। now next again true discount means nothing but simple interest। so true discount is equal to, so यहाँ पे फॉर्मूला में sum due is equal to present worth plus true discount। so therefore true discount is nothing but simple interest on that product। so true discount is equal to present value into n into r upon 100। here n means period of credit allowed। so n means in this case n is equal to n means period of credit allowed and r means rate of interest। so rate of true discount is equal to present worth into n into r। so true discount means nothing but simple interest on that product। now fourth definition drawer। so drawer means a person who draws a bill is called as a drawer। a person who draws a bill। so fourth definition, so drawer means a person who draws a bill or simple the writer of a bill means जो person जो बिल लिख रहा है मीन्स प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वो जो बिल दे रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ ड्रॉवर। और सेकंड है ड्रॉइंग। ड्रॉइंग मीन्स द पेइंग पर्सन मीन्स दैट इज अ पर्सन होम द बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड एज अ ड्रॉइंग। मीन्स जिसके नाम पे ऊपर बिल ड्रॉ किया है दैट इज कॉल्ड एज अ ड्रॉइंग। मीन्स ड्रॉइंग इस पर्सन को बिल पेड करना है ड्रॉवर को, सो दैट इज कॉल्ड एज अ ड्रॉइंग। और सिक्स इज डेट ऑफ बिल। so date on which bill is drawn is called as a date of bill। means जिस डेट पे बिल निकाला गया वो दैट इज कॉल्ड एज अ डेट ऑफ बिल। नाउ अमाउंट फॉर which face value, so face value or sum due। so face value or sum due means the amount for which bill is drawn is called as a face value। so amount for which bill is drawn, so date of bill पे जो फेस वैल्यू मीन्स क्रेडिट पे जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, सो जो बिल जनरेट किया है 104 रुपीज, सो दैट इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू और सम ड्यू। नो नॉमिनल ड्यू डेट,
So date on which period of bill expires is called a nominal due date. So date on which period of bill is expires means अगर 4 मंथ के क्रेडिट पे अगर वो प्रोडक्ट दे रहा है तो बिजनेसमैन 4 मंथ के क्रेडिट पे प्रोडक्ट दे रहा है so that is called as nominal due date means after 4 months अगर टुडेज डेट के लिए वो प्रोडक्ट दे रहा है एग्जांपल टुडेज डेट है 23/09 to 20 so after 4 months means 23/01/2020 तो टुडेज के डेट में वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है so after 4 months date is 23 January 2021 means this is called as a nominal due date after 4 months means definition of this is the date on which period of bill expires that is called as a nominal due date the buyer has to make the payment to seller on this date means इस डेट पे buyer को seller को bill पे करना है means this person is buyer so buyer has to pay bill on this day to the seller of goods now next nominal due date sorry legal due date so legal due date means there is days of grace means after nominal due date means अगर today's वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं seller after 4 months so this is called as a nominal due date means 4 month is nominal due date means 23 January 01 this is called as a nominal due date so after 23 January 2020 so उसके बाद 3 days का days of grace means grace period that is called 3 days means 26/01/2020 means 26 January 2021 so that date is called as a legal due date means nominal due date के बाद 3 दिन का days of grace होता है means 3 days के लिए उसको परमिशन दिया जाता है so that is called as a legal due date this is 26 is called as a so seller product sell कर रहा है 23 सितंबर 2020 को बिल जनरेट किया है बिल ऑफ पीरियड इज 4 मंथ का पीरियड है क्रेडिट पे 4 मंथ के क्रेडिट पे बिल दे रहा है सो बायर्स को 23 जनवरी 2021 को बिल पे करना है सेलर को सो दिस डेट इज कॉल्ड एज अ नॉमिनल ड्यू डेट सो अगर नॉमिनल ड्यू डेट के बाद 3 डेज का ग्रेस ऑफ डेज मींस 3 डेज ग्रेस पीरियड होता है सो दैट डेट मींस 26 जनवरी 2021 so that date is called as a legal due date next discounting bill so discounting of bill means if a drawer of bill wants to money means अगर drawer means जो businessman है if drawer wants to या drawing wants to pay a bill before nominal due date before nominal due date means जो nominal due date है उसके पहले ड्रॉवी को बिल पे करना है सो इन दैट केस फैसिलिटीज अवेलेबल टू डिस्काउंट ऑन ए बिल डिस्काउंट ऑन ए टोटल सम ड्यू सो दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल मींस इफ ड्रॉवी ऑफ बिल वांट्स मनी बिफोर लीगल ड्यू डेट देन देयर इज अ फैसिलिटी अवेलेबल एट द बैंक और विद एजेंट हु कैन डिस्काउंट द बिल एंड पे द अमाउंट टू द ड्रॉवर मींस दिस इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग ए बिल अगर जो बायर है बायर को बिफोर लीगल ड्यू डेट के पहले उसे अगर बिल पे करना है तो इन दैट केस बिल को डिस्काउंट किया जाता है जो टोटल फेस वैल्यू या सम ड्यू है टोटल तो उसके ऊपर बिल को डिस्काउंटिंग किया जाता है सो दैट इज कॉल्ड एज ए डिस्काउंटिंग अ बिल तो बिल इज डिस्काउंटिंग इज डन बाय एजेंट और बैंकर्स now next definition bankers discount so bankers discount means the banker will deduct amount from the face value of the bill at a given rate of interest for the period from the date of discounting so this is called as a bankers discounting means deduct amount from the face value of the bill so bankers discount means deduct some amount from the face value because
this buyers want to pay bill before legal due date, means इस buyer को legal due date के पहले बिल पे करना है, तो इसके लिए बैंक जो टोटल फेस वैल्यू है, टोटल सम ड्यू, तो उसके ऊपर दैट इज इट डिडक्ट सम अमाउंट फ्रॉम फेस वैल्यू, सम अमाउंट फ्रॉम फेस वैल्यू एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट अप टू द लीगल डेट. So that deducted amount from face value, that is called as a banker's discount. Means if suppose 23 January is nominal due date, तो उसके पहले अगर बायर्स को पेमेंट करना है या सेलर को मनी चाहिए उसके पहले, तो अगर 2 months, अगर 23 सितंबर के बाद 2 month कंप्लीट होने के बाद बायर्स को अगर पेमेंट करना है कंप्लीट, सो आफ्टर दैट 2 months बाकी है, सो 2 months का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट फेस वैल्यू से डिडक्ट कर दे, सो दैट अमाउंट ऑफ 2 months इंटरेस्ट इज कॉल्ड एज बैंकर्स डिस्काउंट. सो दिस इज डन बाय बैंक और थर्ड पार्टी. नाउ कैश वैल्यू मींस इफ सेलर सेल्स द गुड्स, मींस अगर सेलर बाय सेल किए है गुड्स का, सो कैश वैल्यू मीन्स इफ सपोज दिस बायर पेज अमाउंट आफ्टर 2 months, मीन्स 4 month का पीरियड है, पीरियड ऑफ बिल 4 month का, अगर 2 month के बाद बायर्स बिल पे कर रहा है, सो 2 month का जो भी इंटरेस्ट है, 2 month का इंटरेस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू, सो दैट इज कॉल्ड एज कैश वैल्यू. मीन्स द अमाउंट पेड टू द drawer of the bill after deducting bankers discount, means deducting bankers discount from the face value, so that is called as cash value. means अगर 4 month का पीरियड है, डेट ऑफ पीरियड 4 month का, 2 month के बाद जो भी इंटरेस्ट है, so 2 month का इंटरेस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू, so that is called as cash value. Now 13 bankers gain. So difference between bankers discount and true discount is called as bankers gain. So difference between bankers gain, bankers discount means this and true discount. So difference between bankers discount and true discount, so that is called as a bankers gain. So here in this formula, bankers discount is equal to, so banker discount is equal to sum due into n into r. Means bankers discount is nothing but simple interest on sum due or face value. Means banker discount is simple interest on sum due. And other bankers gain, so bankers gain is simple interest on true discount. So true discount into n into r upon 100. Here n stands for period of credit allowed and r is rate of interest. Now fifth, bankers gain is difference between bankers discount minus true discount, and cash value means face value या sum due minus bankers discount. Cash value means sum due and minus bankers discount. So these are the total 13 definitions and 6 formulas. Students, आपको एक जो 13 डेफिनेशंस केयरफुली इसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है, स्टडी करना है, और 6 फॉर्मूलाज कंटिन्यूअसली आपको ध्यान में रखिएगा. तो जो प्रॉब्लम्स जो डिपेंड्स है इस फॉर्मूलाज पे, तो अगर ये फॉर्मूलाज आप ध्यान में अगर रख रहे हैं तो ये फॉर्मूला इसके जो एग्जांपल्स है वो सॉल्व कर सकते हैं. तो प्लीज रीड ऑल दिस डेफिनेशंस एंड कीप इन माइंड दिस 6 formulas, so you can solve the problems which depends on these formulas. Examples, exercise 1.2. The problem is that what is the present worth of sum of 10,920 rupees due 6 months, hence at 8% per annual simple interest. So exercise 1.2 and example number 1. So here the given are sum due is given 10,920 rupees and date of credit is 6 months. So 6 months means in years
half years, and rate of interest is 8% per annum. So what is present work? Means हमें present work calculate करना है. So first of all, so these are the given. We have present work. Sorry, sum due is equal to sum due या face value. So sum due या face value. 8 month का date of period है. Means sum due is equal to present work plus true discount. So present work means जिस दिन प्रोडक्ट सेल किया है वो डेट है प्रेजेंट वर्क, एंड ट्रू डिस्काउंट मींस एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट, और 8 मंथ के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रू डिस्काउंट. तो इसमें सम ड्यू प्रेजेंट वर्क हमें कैलकुलेट करना है, और सो ट्रू डिस्काउंट फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करना है. आगे present work is equal to, so true discount is nothing but simple interest on present work. So true discount का फॉर्मूला है, so true discount is simple interest on present work into date of period into rate upon 100. So again take PW common. So 1 plus, so present work common out of bracket, 1 plus n into r upon 100. So present work is equal to 1 plus n means half year and r means 8% upon 100. So therefore present work is equal to 1 plus 8 upon 200, 1 plus 1 upon 25. So here therefore sum due is equal to present work into bracket 1 plus 1 upon 25. So sum due 10,920 rupees given, sum due 10,920 rupees. So present work calculate करना है हमें, and 1 plus 26 upon 25. So therefore present work is equal to 10,920 into 25 upon 26. Again therefore present work, so after calculation this present work is 10,500. So we have sum due there given at 10,920 rupees, and date of credit, तो 6 month के लिए डेट ऑफ क्रेडिट, and the rate of interest is 8%. So this is the formula sum due equal to present work plus true discount. So true discount means simple interest on present work. Again take present work common, so 1 plus, so after calculation you get present work of that product is means जो present value है product का वो है 10,500. So next example, next second number example from exercise 1.2. So what is sum due of 8,000? So due 4 months, 4 months का डेट ऑफ पीरियड ड्यू डेट है 4 months या क्रेडिट अलाउड फॉर 4 months is at 12.5% simple interest. So 12.5% simple interest means true discount is 12.5%. Now calculate sum due of that product, means after 4 months what is the price of that product, means जो buyer है buyer को जो bill पे करना है, so that value of that goods after 4 months. So in this example given, first of all आपको लिखना है, so given है
what is the sum due of 8,000? So 8,000 means present work is 8,000 rupees and due 4 months means N is equal to 4 months या 1/3 years. 4 months means in year 1/3 years and simple interest is equal to rate. So rate of interest is 12.5 interest, 12.5%. Now first of all we know sum due is equal to present वर्क प्लस ट्रू डिस्काउंट. सो ये फॉर्मूला हमें मालूम है. सम ड्यू इज इक्वल टू सम ड्यू या फेस वैल्यू आफ्टर 4 मंथ्स. सो इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वर्क प्लस ट्रू डिस्काउंट. सो हमें प्रेजेंट वर्क 8,000 है. सो ट्रू डिस्काउंट यहाँ इस प्रॉब्लम में नहीं दिया है, तो पहले आपको ट्रू डिस्काउंट कैलकुलेट करना है. या ट्रू डिस्काउंट is nothing but true discount means simple interest on present work. So true discount is PW into N into R upon 100 means true discount is simple interest on present work. So put the values of present work is 8,000 into N means 1/3 into R 12.5 अपॉन 100. तो आगे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं 80 इंटू 12.5 अपॉन 3. सो therefore ट्रू डिस्काउंट इज 332.8 रुपीज. After calculation, true discount is 332.8 rupees. Now calculate sum due. Therefore, sum due is equal to present work 8,000 plus true discount 332.8. So total 8,332.8 rupees is sum due or face value. So after 4 months जो बायर 4 month के बाद उसे 8,332.8 रुपीज पे करना है. सो टुडेज प्राइस है वो जो प्रोडक्ट है या गुड्स है टुडेज उसका प्राइस है प्रेजेंट वर्थ है 8,000 रुपीज और 4 मंथ के बाद उसे पे करना है 8,332.8 रुपीज. सो जो 332.8 रुपीज है वो ट्रू डिस्काउंट है. ट्रू डिस्काउंट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्क. तो नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम फ्रॉम दिस एक्सरसाइज. नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल. द एग्जांपल इज ट्रू डिस्काउंट ऑन सम ड्यू 8 months. True discount on sum due 8 months, hence at 12% per annual is 560 rupees. So find sum due and present work of the bill. Means इसमें that is date of credit allowed 8 month का डेट दे 8 month का period of bill is 8 month and rate of interest is 12% per annual. So true discount is 560 rupees. So true discount means simple interest on present work. So हमें sum due या face value means after 8 month के बाद जो buyers को जो bill पे करना है तो उसका वैल्यू sum due and present work means today's का जो उसका प्राइस है गुड्स का. So that is present work of the bill find करना है. So first तो given इस एग्जांपल में given है n is equal to 8 months. So 8 months के क्रेडिट पे वो दे रहा है. So
So 8 months means in years 8 by 12 years means 2 by 3 years and rate of interest. So मंथ्स में जो डेट ऑफ क्रेडिट या क्रेडिट अलाउड कर रहे हैं 1 मंथ्स के लिए वो आपको ईयर्स में करना है क्योंकि जो इंटरेस्ट है सो इंटरेस्ट 12% फॉर एनुअल इंटरेस्ट ईयरली इंटरेस्ट 12%. तो दैट्स व्हाई तो मंथ को कन्वर्ट करना है ईयर्स में. तो ईयर्स में हो गया 2.3 इयर्स. तो 8 by 12 इयर्स मींस 2 by 3 इयर्स. तो r small r is equal to 12%. Small r is equal to 12% and true discount TD is equal to 560 rupees. True discount. तो हमें sum due and present worth कैलकुलेट करना है. So we know that true discount means simple interest on present worth. So true discount is equal to present worth into L into R upon 100. So therefore true discount is given 560 rupees. So आपको present worth कैलकुलेट करना है. So present worth into N into R upon 100. Therefore present worth is equal to 560 into 100 upon N into R. Again 560 56,000. N means 2 by 3 into R means 12. So after calculation present worth is 7,000 rupees. Means after calculation present worth of that product is 7,000 rupees. Means today's value of that product is 7,000. Now again sum due. Therefore sum due is nothing but present worth plus true discount. So present worth is 7,000. True discount is 560 rupees. Therefore 7,560 rupees is sum due or face value. 7,560 rupees sum due or face value after 8 months. That is value of that product after 8 months is 7,560 rupees. So next example. Next fourth example. 6 number example from your exercise 1.2. Find true discount, banker's discount, banker's gain on bill of 4,240 due for 6 months and hence at a rate interest of 9% per annual. इस प्रॉब्लम में ट्रू डिस्काउंट फाइंड करना है, बैंकर्स डिस्काउंट एंड बैंकर्स गेन. तो सम ड्यू है 4,240 रुपीज सम ड्यू है या फेस वैल्यू एंड ड्यू डेट मींस ड्यू फॉर 6 months ड्यू के लिए एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%. तो गिवन फर्स्ट राइट गिवन हियर सम ड्यू दिया है 4,240 rupees sum due and here means 6 months. So that is period, that is allowed period या credit allowed for 6 months. So 6 months means 1.5 years and rate of interest 9%. Small r is equal to 9%. तो फाइंड ट्रू डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट एंड बैंकर्स गेन. तो अगर ट्रू डिस्काउंट फाइंड करना है तो प्रेजेंट वर्थ हमें मालूम होना चाहिए. सो प्रेजेंट वर्थ के लिए सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट.
So true discount is equal to present work plus true discount means simple interest on present work. Present work into n into r upon 100. So again present work common factor into bracket 1 plus n means half year, r rate of interest 9%, bracket complete. So 1 plus 9 upon 200. So sum due, value of sum due is 4,240 rupees and period plus यहाँ पे 2,209 upon 200. So therefore present value is equal to present worth is equal to 4,240 into 200 upon 209. So present worth is equal to 4,057.41 rupees. So after calculation, present worth of that product is 4,057.41 rupees. Now using this present worth, calculate true discount. So true discount is equal to, therefore true discount is equal to sum due minus present worth. So true discount means sum due minus present worth. So sum due is 4,240 minus present worth 4,057.41. So therefore, so true discount 182.58 rupees. So true discount is equal to sum due minus present worth, because present worth is equal to addition of sum due plus true discount. So therefore true discount is equal to sum due minus present. So true discount is 182.58 rupees. Now bankers discount. So bankers discount is simple interest on sum due. Banker discount is equal to sum due into n into r upon 100. So therefore sum due is 4,240 rupees into half year, n is half year, and rate of interest is 9 upon 100. After calculation, bankers discount is 190.8 rupees. After calculation, so banker discount is equal to 190.8 rupees. So therefore last bankers gain. So bankers gain is bankers discount minus true discount. So banker discount is 190.8 minus true discount 182.58 rupees. Therefore, after subtraction, bankers gain is 8.22 rupees. Means bankers gain is equal to bankers discount minus true discount. So banker discount 190.8 rupees है minus true discount 182.58 rupees. So therefore bankers gain is difference between banker discount and true discount 8.22 rupees. So this is something about present worth, sum due of face value,
ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स गेन, बैंकर्स डिस्काउंट एंड ड्रॉवी। तो दिस इज फर्स्ट चैप्टर इज यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। तो स्टूडेंट्स आपको ऑल फार्मूला का लिस्ट करना है, तो लिस्ट और उसका प्रैक्टिस करना है, तो ये एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू।